Welcome to Mental Health Now. So we hope that all of you are keeping fine, safe. सारे प्रिकॉशनरी प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे हैं एंड एज वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन अलोंग विद योर फिजिकल हेल्थ यू आर वेरी मच कंसिडरेट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. अपनी मेंटल स्टेबिलिटी अभी तक बनाए रखे हैं. सो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट मोस्ट मैसेज आई वांट टू डिलीवर. नाउ मेंटल हेल्थ टिप इज न्यूज एंजाइटी एंड हाउ यू नीड टू टैकल विद इट. सो बेसिकली यही है आज का टॉपिक एंड मैं कुछ लास्ट कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से ये देख रही हूँ दैट people are trying to keep up a lot with news. They want to know every second what is happening. So I thought that it is the right time to talk about news anxiety and how this can actually impact your mental space. But you know, it is not exactly wrong, or I am not saying that you should not watch news at all. I am not being extreme here, but I think ये चीज हम हमेशा बोलते हैं कि एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन, द बैलेंस हैज टू बी ऑलवेज देयर. सो आज का वीडियो स्टार्ट. So now the question comes how to beat or tackle this news anxiety. The first thing, turn off your news notification and all the alerts you have subscribed to. I think it's not traditionally जैसे हमारे पास सिर्फ न्यूज़पेपर आता था और हम सिर्फ न्यूज़पेपर खोलते थे, बैठते थे, पढ़ते थे तो हमको न्यूज़ के बारे में पता चलता था. It's all digital now. You know, we can be aware about our entire world updates and everything through just our mobile phone. So you don't need the entire newspaper nowadays. तो अभी क्या है कि हमने कुछ न्यूज चैनल्स को या कुछ हमने ऐसे चीजों को सब्सक्राइब किया होता है कि फोन का you see that notification just pops up, like that becomes something which is out of your control. Maybe you're in an important task, maybe if you were in a good mood and वो एकदम से अलर्ट बजता है एंड इतना डेथ रेट हो गया, इतना ऑक्सीजन कम है, दिल्ली इज डीलिंग with this, Mumbai is dealing with this and so on and so forth. So वो alerts को बंद करना बहुत जरूरी है. See, everything I think has to be somewhere in your control till the level you can control it, right? तो अगर आप ऐसे सब्सक्राइब कर देते हैं न्यूज अलर्ट्स को या कुछ न्यूज इन्फॉर्मेशन या कुछ यूट्यूब चैनल्स को या कुछ भी इस तरीके के सोर्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सो दे सेंड यू, या तो आपका ईमेल पॉपअप करता है या फिर आपका दीज न्यूज अलर्ट विल पॉप अप. सो यू डोंट नीड टू डू दैट. आपको कुछ चीजें जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्राई टू keep things in your control. I think so that is most important. Turn off. You are not missing anything really important, believe me. अभी तक आप लोगों को पता है what is COVID. You know what precautions you have to take. It's been almost, we are dealing this from last year almost. It's gonna be second year now. So we almost know the basic stuff. So you are not missing on anything, first of all. Only check the news at some specific times in the day. You don't need to, as I've already mentioned, कि आपको 24 घंटे न्यूज देखने की जरूरत नहीं है. आप कुछ स्पेसिफिक टाइम बना सकते हैं. Then you can maybe check few headlines, or maybe you can check about the vaccine and stuff, and then you can just put it off. So जैसे what I do personally with me, because हमें होता है that वो एक curiosity तो है कि हमें देखना है क्या चल रहा है, कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ, वो होता है. But when right in the morning, I don't prefer it because I like my mornings to be really calm and really free of these external things. So when I plan my day and when I have my daily targets, I do that, and post I am done with my major chunks of the work for today and I'm just resting or chilling or doing my own things. At that time I just open my feed, I just open my Okay, so here comes the tip 3. Go to trusted and more authentic news channels and news resources. These sources from where you see the news. आप
सिर्फ सोशल मीडिया को यूज मत करिए कुछ जानने के लिए, बिकॉज इन द एंड सोशल मीडिया पे हर चीज फैक्ट्स हो इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हो सकता है इट्स द ओपिनियन ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ ग्रुप और अ कम्युनिटी. सो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर, इफ यू वांट टू चेक द रेट्स और इफ यू वांट टू चेक द ग्राफ या थिंग्स लाइक दैट, तो आप थोड़े ऑथेंटिक सोर्सेस का इस्तेमाल करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको कोई रिपोर्ट ही देखनी है, आपको देखना है आज का कितना रेट चल रहा है, एंड यू वांट टू सी की व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू बेसिकली. सो पिक मोर ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज rather than just opening up YouTube चैनल और किसी के इंडिविजुअल ओपिनियन से आपको फिर इफेक्ट पड़े. सो इट्स इंपॉर्टेंट आप कहाँ से न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड अगर इफ समवन इज सेंडिंग यू एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टफ even on your WhatsApp, even on your different social media platforms, mute them till the point you feel it's right. Do everything to keep you sane at this time. I think it may sound really harsh or something, but it is what it is. Okay, तो अब हम अपना 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं. द टिप 4 बेसिकली, हैव अ न्यूज फ्री sleep routine. You have to really switch it off before you sleep, right? आप आइडियली मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप 2 घंटे पहले ही सब स्विच ऑफ कर दीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ गुड टाइम स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग. बट आई नो बिकॉज वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग और ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो एटलीस्ट मिनिमम आप 1 घंटा पहले अपना न्यूज ऑफ कर दीजिए. यू रियली डोंट नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ न्यूज बिफोर यू स्लीप, बिकॉज सी इट्स दैट टाइम वेयर योर बॉडी रियली नीड्स टू काम डाउन, रियली नीड्स टू रिलैक्स एंड just try to get ready for the next day. So you really need to sleep is that time where you really need to winding down your system and everything. So उस time पे अगर आप news 1-2 घंटा पहले avoid करेंगे, that would be really good for you. And I think the last tip, but I always say this is the most important relaxation exercise which you can do it for yourself, is deep breathe, right? Just to conclude, what are we taking away from today's video is that being little sad, being anxious is completely natural and normal, because this is a crisis. This is a hell of a crisis, and it is natural to feel that way. We all are together in this. We are struggling, even we are struggling day by day to deal with our thoughts and our a lot of other things. So don't feel that only you are feeling certain emotions. It is quite natural, right? Yes. So what have we learned? The first thing we have learned that we are definitely gonna switch off, unsubscribe, mute our notification news alerts, our email pop-ups, right? Secondly, we're gonna see that we will only use trusted and more authentic news sources and not just YouTube and social media, because that contains opinion of people and we want to know the facts, right? And there will be always have to be a specific time, not just same time every day, but there has to be 1 or 2 times in a day where you just go check news and then come back, where you are able to deal with it emotionally. You don't have to check news 24 घंटे देखने की जरूरत नहीं है. You just need to take care of yourself, survive each day, and just try to be happy. Do what you have been wanting to do from a very long time, और आपको टाइम नहीं मिलता था. Now because you're home, you can actually do that, right? And last but not the least, deep breathe करना है हमें. अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पूरे दिन में कुछ ना कुछ करना है, right? And shut the news before 1 to 2 hours before you go to bed, and have a peaceful, relaxed sleep, right? So that's all I wanted to talk, that just don't consume news so much that it becomes one of the source of your anxiety, because we are anyways dealing with a lot of a lot of other things nowadays. A lot of intense emotions and a lot of sadness and helplessness is there. So why to add more burden on ourselves, on our mental health and stability, right? So we're gonna wrap up here. Don't forget to like and subscribe our channel. Hit the bell icon to get updates on every time we upload a new video. Stay connected, and thank you so much for watching.